Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 6. Open the book, open page number 40. Now come to the exercise. Choose the correct option and write in the space provided. Is the icon of dash. ये icon किसका है? Position. Number 2. Line spacing is present in dash group. Line spacing is present in paragraph group. Number 3. Dash is present in dash tab, insert tab. Number 4. Portrait and landscape are two types of page orientation. Number 5. D in 3D represents dimensional. Number 6. Ctrl plus S shortcut is used to save the document. B part. Fill in the blanks. Number 1. Dash is the amount of space before or after a paragraph. पैराग्राफ से पहले और बाद की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग. नंबर 2. लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन डैश टैब. लाइन स्पेसिंग प्रेजेंट ऑप्शन जो है प्रेजेंट है होम टैब में. रोटेट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन फॉर्मेट टैब. Number 4. You can also change shadow dash to enhance your document appearance. Shadow color. C part. Tick the correct and cross the wrong ones. When you insert a word or text, view tab automatically appears. जब आप insert text word or text जो है insert करते हैं तो कौन से tab automatically appears होते हैं? View tab. Cross. View tab नहीं, design and layout tab appears. Symbol. Symbols can be added using insert tab. True. Number 3. You can draw as many lines and arrows in your documents. आप अपने document में बहुत सारी lines और arrows को draw कर सकती हैं. True. Number 4. Portrait and landscape are two types of paragraph setup. Paragraph setup नहीं है, page orientation है. False. Number 5. Control plus Z is used to undo an action. True. Number 6. You cannot set page margins in MS Word document. आप MS Word document में page margin को set नहीं कर सकते. False. Turn the page. Page number 42. Group activity. Search on net the information about saved trees and make an attractive document in MS Word using all command or option you have learned. आपने नेट से इंफॉर्मेशन को सर्च करना है सेव ट्रीज की और एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है MS Word में इन कमांड्स को यूज़ करके जो भी आपने लर्न किए हैं इन दिस चैप्टर. सो this is the icon of to insert word art. Number 2. To set page margin. Number 3. To change image position. 4. To rotate an image. And this to insert symbols. So last one is to set paragraph spacing. I hope I clear my points. Now move towards the question answer and your homework and kindly write neatly on the copy with black pen questions and topic name. So question answer chapter number 3. Write date on the top of the page, chapter number, topic name, MS Word 2010. Key terms, margin. Write with black pen. Blank spaces around the edges of a page. Orientation, the layout position of the document, maybe either portrait or landscape. 3D effect, it makes an object look 3-dimensional. Auto shape, it is a plate of predefined shapes. Question number 1.
Write down the function of the following useful shortcuts and function. Number 1, Control plus Z to undo an action, Control plus Y to redo or repeat an action, Escape to cancel an action, Control plus S to save a document, Control plus W to close a document, Control plus 1 to set line spacing to single space, Control plus 5 to set line spacing to 1.5 spaces, Control plus 2 to set line spacing to double spaces, Control plus O to open a document, Control plus A to select text of entire document, Control plus U to underline the text, Control plus B to bold the text. Then come to the short question answer. Question number 1. Define MS Word. MS Word क्या है? Microsoft Word or MS Word is a graphical word processing program that users can type with. It is made by the computer company Microsoft. Its purpose is to allow users to type and save documents. Similar to other word processors, it is helpful tools to make document. Question number 2. Which tab you will click to insert word art? To insert word art, you will click Insert tab. Question number 3. Define paragraph spacing. Paragraph spacing is the space before or after a paragraph in a used document. Now come to the long question answer. Long question answers book पे mark करेंगे. So open the book. Page number 31. Page number 31. Long question number 1. Long question number 1. What is word art? Write the steps to insert word art text in a document. वर्ड आर्ट क्या है और वर्ड आर्ट को वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के स्टेप्स राइट डाउन करें. सो फॉर आंसर इज वर्ड आर्ट की हेडिंग दें. ठीक है, यहाँ से लिखना है ये इसका आंसर. वर्ड आर्ट की हेडिंग, वर्ड आर्ट इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग यूटिलिटी अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन. It helps in providing special effects like outlines, shadow, textures and 3D effect to the text. सबसे पहले आपने word art को define करना है. So this is the definition of word art. उसके बाद आपने कहाँ से लिखना है? उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है to insert word art text, follow the given step. Click the insert tab. Number 2 point write करना है. फिर number 3 choose and click the style you want to insert. The placeholder box opens. Number 4 you can type your text in placeholder box. 4 step यहाँ तक लिखना है. उसके बाद 5 the word art text gets inserted in your document. So answer number 1, long answer number 1 is complete. Okay, so next question is question number 2. Question number 2, page number 35. Question number 2 is define page orientation. What is the procedure to set up page orientation? So answer is, आंसर आपने लिखना है यहाँ पेज ओरिएंटेशन की हेडिंग देनी है. पेज ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. यू कैन बस डॉक्यूमेंट तक. पेज ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. एंड देन फिर यहाँ से स्टार्ट करना है. टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ तक ऑफ फॉर योर डॉक्यूमेंट. सो आंसर नंबर 2 इज कंप्लीट. Question number 3. Question number 3, come to the page 34. Question number 3 is define page margin. Question number 3 is define page margin. Question number 4, come to the page 35. Question number 4 is define page margin. Question number 5, define page margin. Question number 6, define page margin. Question number 7, define page margin. Question number 8, define page margin. Question number 9, define page margin. Question number 10, define page margin. Question number 11, define page margin. Question number 12, define page margin. Question number 13, define page margin. Question number 14, define page margin. Question number 15, define page margin. Question number 16, define page margin. Question number 17, define page margin. Question number 18, define page margin. Question number 19, define page margin. Question number 20, define page margin. Question number 21, define page margin. Question number 22, define page margin. Question number 23, define page margin. Question number 24, define page margin. Question number 25, define page margin. Question number 26
define page margin, enlist the steps to apply, enlist the steps to set, apply नहीं, enlist the steps to set page margin. So answer is first heading page margin. Page margin is the blank space around the edges of the page. यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये वाली लाइन कट कर दें, ये यहाँ डॉक्यूमेंट तक, फिर यहाँ से लिखना है इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट नीट एंड टाइडी एज वेल एज प्रेजेंटेबल. देन टू सेट मार्जिन्स फॉलो द गिवन स्टेप, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. यहाँ तक सेलेक्ट एंड क्लिक द मार्जिन टाइप एज यू विश टू अप्लाई टू योर पेज. Come to the question number 4. So question number 4, page number 37. Page number 37. Long question number 4 is what is line spacing? What are the basic steps required to set line spacing? So answer is first heading line spacing. Line spacing is the space between the lines of the text in our document. Line spacing is the space between the lines of the text in our document. Then to set line spacing, follow the given step. First point, second point, third point and fourth point between the lines. So answer number 4 is complete. Then come to the question number 5. Question number 5 इसी पेज पे है. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द बेसिक स्टेप्स टू इंसर्ट सिंबल्स इन अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में सिंबल को इंसर्ट करने के बेसिक स्टेप्स राइट करें. सो आंसर स्टार्ट करना है यहाँ से. टू ऐड की जगह लिखना है इंसर्ट. टू इंसर्ट सिंबल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है. टू ऐड सिंबल्स फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल. क्लिक द इंसर्ट टैब. Click symbol from symbols group. A list of symbols appear. Select and click the symbol you want to insert. The symbol will get inserted in your document. So now move question number 6. Question number 6 is page number 33. Page number 33. How to apply 3D effect to word art text. So answer is यहाँ से start